Good afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon. I hope my voice is clear. Yes, sir. So all of you are able to see the screen right now. Yeah, sir. Fine. So wait for another 3 minutes. So we shall be starting exactly a sharp 1:45 p.m. Till then, those who have joined, if they can ask if anything to be asked regarding this subject or maybe in general. कुछ भी आपको अगर पूछना हो अभी 2-3 मिनट है हमारे पास बाद में भी खैर आप पूछ सकते हैं बट अभी तक कोई डाउट हो तो अभी मैं सिर्फ 5 बच्चों को देख रहा हूँ now it is 11 वंश Yes, sir. yeah I was just checking that your name was coming without ID but now it is showing thank you another 1 minute so those who are yet to join please ask your friends to join fast we shall be starting 12:45 1:45 मेरी तरफ से आवाज क्लियर है अगर किसी का सेटिंग में कुछ इशू है दे कैन सॉर्ट इट आउट इट इज 1:45 shall we start I'm seeing only 12 so far शुरू करें okay yeah Rohit is typing that we can start in any case one can join in between as well but I would always request all of you to join in time because time is the most important factor like for every aspect whether it's learning or you are doing something unless until you do not manage the time it will not help any cause that you are in right? Anyhow so the topic remains the same the subject is mechanics of solids I have told you that this subject is called by some other names so somebody can repeat me what are the other names for this subject you might be dealing in coming semesters or maybe some another books some of the books are with some different name but the subject remains the same can I have the name please Strength of material. strength of material Structural analysis. structure analysis right so these are the three common names that we generally come across as far as the topic of dealing with solids or mechanics of solids or strength of materials and structural analysis for the civil engineering students especially for the civil engineering background we generally call it as structural analysis because some of the topics we shall be dealing purely with respect to civil engineering. So last time we had discussed what are different types of forces. So you'll be uh,
dealing with the different types of forces in coming semesters as well. But as far as the basic introduction was concerned, so we have named it, right? So we now try to move a little bit forward. I have already forwarded the handwritten notes. I'm sure all of you have got it on your WhatsApp group. Yes, sir. Okay, so we'll be carrying those notes only. That is, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि आप सिर्फ notes के ऊपर आप notes को पढ़ें, उसको ध्यान से पढ़ें. These are just the guidelines. You have to supplement the information with respect to these notes from the books. I have already given one soft copy of one of the books. वो भी आपको मिल गया होगा. Yes, sir. राइट. आई एम नॉट श्योर, आई विल नॉट बी आस्किंग कि अभी आपने पढ़ना शुरू किया कि नहीं किया. अगर कर दिया तो अच्छी बात है, अगर नहीं करेंगे तो शायद आप थोड़ा सा पीछे रह जाएंगे. So last time we were discussing different types of loads, and as I told you that जब भी किसी चीज के ऊपर को फोर्स लगती है तो आप 8वीं 9वीं 10वीं से पढ़ते आए हैं कि ये किसी भी चीज का एक नेचुरल टेंडेंसी होती है कि अपनी रेस्ट पोजीशन में अगर वो चल रहा है तो चलता रहना चाहेगा, अगर वो खड़ा है तो खड़ा रहना उसकी नेचुरल टेंडेंसी होती है. दैट मीन्स वी कॉल इट ए स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम. So whenever some kind of external force or certain arrangement is acted upon that body or the material, that induce some kind of a resistance from that body, from within that body. उसके अंदर से कुछ निकलता है कि उसको अपोज करने की कोशिश करती है. अगर हम उसको लगातार उसके ऊपर फोर्स लगाते रहेंगे तो दैट फोर्स tries to induct some kind of stress, right? So basically stress जो शब्द हम यहाँ पे use कर रहे हैं. So we'll be today's lecture we shall be talking about the stress, the word stress. So I'm just highlighting this is the word stress. So whenever some force is applying, these are the general sentences. आपने जो पढ़ लिया होगा, जो मैं अभी बोल रहा हूँ ये इसमें लिखा हुआ कि जब किसी की फंडामेंटल नेचर या फंडामेंटल अरेंजमेंट के अगेंस्ट कोई काम करते हैं, उसके ऊपर को फोर्स लगाने की कोशिश करते हैं, उसको चेंज करने की कोशिश करते हैं, वो उसमें स्ट्रेस पैदा कर देते हैं, राइट? दिस हैपेंस टू अवर माइंडसेट एज वेल. सो देयर द सेम अप्लाइज ओवर हियर कि जब कोई फोर्स ऊपर लगती है तो उसके अंदर से रेजिस्टेंस पैदा होता है, राइट? दैट रेजिस्टेंस व्हिच इज डेवलप्ड against the external forces in general we call it as stress. So as simple as that. So that's the nature of stress. कि कौन सी स्ट्रेस पैदा होगी उसमें, प्योरली द अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द फोर्स. इसलिए हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि फोर्सेस कितने तरह की, तो जिस तरह की फोर्स उसके ऊपर लगेगी उसी तरह की स्ट्रेस जो है टेक्निकली इन टेक्निकल टर्म्स वी शैल बी डिफाइनिंग द वर्ड स्ट्रेस. होता क्या है जब स्ट्रेस पैदा होती है? अगर मैं आपको पूछूं कि अगर आपका मन स्ट्रेस में है या आपकी बॉडी स्ट्रेस में है तो आपका मूड ऑफ हो जाता है, आपको काम करने का मन नहीं करता है, लाइक देयर आर कुछ बीमारियां भी हो सकता है लग जाए. सो व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ दिस स्ट्रेस ऑन दैट बॉडी? द रिजल्ट हियर वी शैल बी टॉकिंग इज द चेंज इन द शेप ऑफ दैट बॉडी. या तो उसकी शेप इन जनरल शेप, फॉर एग्जांपल दिस इज 3 dimensional बॉडी हियर. इसको खींचेंगे तो ये लंबा हो जाएगा, राइट? इसको दबाएंगे तो ये थोड़ा छोटा हो जाएगा. इसको चारों तरफ से फोर्सेस लगाएंगे तो चारों तरफ से छोटा या बड़ा होगा, राइट? दैट मीन्स सम काइंड ऑफ चेंज विल हैपन इन दैट बॉडी. that is the result of that force and the result of that stress. So there are two terms we are talking about. I'm again highlighting in blue color here. Just check it that the type of nature or the type of the force that is acting on the body defines the type of stress. Nature of the force defines the nature of the stress, and the cause according to is the change in the shape. So these two terms, based upon these two terms, we are moving to the next page. So what is stress? It is clear that stress is the internal resistance of the body against the external forces applied on that body, right? And the type of stress depends upon the nature of the force, and the effect of that force is the change in the shape of that body or the material. So this is the general, we shall be defining it, right? So we now, this is the same, right? What is change in shape? I'm marking it in red here. The change in shape could be length, change in the breadth or width, means या तो लंबाई
चेंज होगी या उसकी चौड़ाई चेंज होगी या फिर वॉल्यूम चेंज होगा, राइट। अगर लेंथ चेंज होगी तो भी वॉल्यूम चेंज होगा, अगर ब्रेड्थ चेंज होगी तो भी वॉल्यूम चेंज होगा, अगर दोनों चेंज होंगे then again the volume shall be there. The length or so we'll be talking about the change in the length or the breadth that will define the change in area or the change in volume, right? The change or the deformation is the word that we shall be using. जब भी change होता है we call it as deformation. Deformation means इस दो हिस्सों में अगर बांट देंगे डी एंड फॉर्मेशन, फॉर्म मीन्स बनाना है और डिफॉर्मेशन मीन्स उसको बिगाड़ना। तो उसकी शेप जब चेंज होगी तो वी जनरली वी कॉल इट एज डिफॉर्मेशन इज हैपनिंग ड्यू टू द एक्शन ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस which cause stress in that body, and the nature of the stress is purely on the nature of the force, and the cause of that stress is the deformation, right? Is it clear? Yes, sir. Okay. So again we coming to the basic definition, technical definition. आप इसको अपने शब्दों में लिख सकते हैं. You do not need to repeat the same kind of wording. You can always expand as per your own sentence formation capability. तो आप इसको रट्टा नहीं लगाएंगे. मेरे कहने का मतलब है कि आपको जब समझ लग जाएगा तो आप उसको अपने शब्दों में लिख सकते हैं. So this is the resistance offered against any attempt to deform the body. Deform means चेंज करने के लिए इज क्वांटिटेटिवली मेयर्ड एज स्ट्रेस, कि उसको टेक्निकली हमने मेयर कैसे करना है. इसको एक्चुअली जब न्यूमेरिकल करेंगे तो स्ट्रेस को मेयर करेंगे, राइट. द अफेक्ट इज मेयर्ड एज स्ट्रेन. तो इसको मेयर करेंगे स्ट्रेस, और जो उसका अफेक्ट होगा दैट इज स्ट्रेन, इसको भी हम मेयर करेंगे, राइट. तो हाउ डू वी मेयर? सो बिफोर वी गो टू द मेजरमेंट वी शैल डिफाइन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रेस. Different types of stress. The stress primarily is defined as the direct stress. Direct stress इसको हम axial stress भी बोल देते हैं. आप अपने साइड पर लिख सकते हैं क्योंकि जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ये बाद में रब हो जाएगा. Axial stress और we call it as longitudinal stress. ये axial लिखा हुआ है यहाँ पे, right? So axial stress means, or the direct stress means, if the force is acting along certain axis of the body. For example, this is a rod here or the prism here, and the forces are I'll just draw the three-dimensional picture here. This is a bar, right? The forces are acting here. Right. This is the length, and this is the width. Then if the forces are acting along the axis, means the center, any line which is passing through the CG of that body in parallel to the main dimension of that body. Main dimension over here is this length, and इस length के parallel जो axis है passing through the center is the longitudinal axis. अगर इसमें से इसके along force लग रही है then we call it as direct force. ये दो तरह की हो सकती है, या तो ये compress करेगी body को अंदर की तरफ, या फिर इसको खींचेगी बाहर की तरफ, दोनों साइड में, राइट. अगर फॉर एग्जांपल इफ दिस इज द रॉड इज फिक्स लाइक दिस, जब हम इसको इस साइड से खींचेंगे तो जहाँ पर रेजिस्टेंस डेवलप होगा इस पॉइंट पे. सो अल्टीमेटली इफ यू ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम, आपने पिछले सेमेस्टर में पढ़ लिया होगा, पढ़ा है कि नहीं मैकेनिक्स में? Yes, sir. हाँ. Yes, sir. तो इस Yes, sir. फोर्सेस आर ट्रांसफर, उसका जो इफेक्ट आएगा वी कैन ऑलवेज ड्रॉ इट. इफ द फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन, मे बी शायद ये टॉपिक भी आपने पढ़ लिया होगा, सो आई एम जस्ट रिपीटिंग इट, बट we need to carry it forward for some different purposes here, right? So axial forces are, according to the direction of the force, are categorized into two categories. One is compressive and second one is tensile. अगर कंप्रेसिव होगी तो उसको छोटा करेगी, बॉडी को, लेंथ को छोटा करेगी, राइट. ये वाली जो लेंथ है ये छोटी हो जाएगी. अगर टेंसाइल है तो ये वाली जो लेंथ है वो बड़ी हो जाएगी, राइट. सो इफेक्ट of the body is to change the dimension or the length of the body. So this is what we call it as longitudinal stress or axial stress, or in some simple terms we call it as direct stress, right. And the second one is as जैसा हमने अभी पहले बात किया कि the nature of the
force defines the nature of the stress. If it is along the axis, we call it as direct stress. If it is acting in some sense that one surface is being sheared, अब इस बॉडी को इस साइड पे ये एक बॉडी ये बन गया और दूसरी बॉडी ये बन गई, राइट? तो दिस इज बीइंग शेयर्ड मींस कट हो रही है बॉडी एक सरफेस से दूसरे सरफेस की तरफ, मींस ये सरफेस जो यहाँ पे था नाउ इट हैज मूव्ड टू दिस प्लेस, so we call it as shear stress. If the force is trying to act along the plane and trying to cut that body along the shear, mind you जब हम इस चीज को कैरी करेंगे जितनी भी सिविल इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर्स हैं, beams हैं, columns हैं, we shall be checking those structures for shear forces and shear stress, and we also shall also be checking the force that body for the bending stress. The bending, this is the next one. अब इसको डिफाइन करेंगे, जितनी भी स्ट्रेस है इसको हम मेजर करेंगे, जैसे अब मैंने कहा ना कि दैट वी शैल बी मेजरिंग इट क्वांटिटेटिवली, इसकी क्वांटिटी को मेजर करेंगे. देन हाउ डू वी शैल मूविंग टू द नेक्स्ट पेज टॉकिंग अबाउट द फॉर्मूलाज लाइक द मैथमेटिकल इक्वेशंस or the notation or the means the physical quantity that with the help of which we shall be able to measure the stress and strain. So if the force is acting away from the center, as we have done in this case, that direct forces में क्या होता है कि वो acting along the center. If the force is acting away from the center at certain angle from the center, or it's not along the axis but it tries to bend. Bending is a very simple term, you can very easily visualize it कि जब किसी चीज को बेंड करने की कोशिश करेंगे तो इट विल टेक दिस शेप, राइट? In that fashion, so this is a separate chapter on bending stress. We shall be covering it later. For the timing, we are focusing on the simple and direct stress. Next, bending stress के ऊपर एक separate chapter है. For example, same is with the torsional or the जब torsion बाद में आते हैं कि जब bend करने की कोशिश करते हैं, then we call it as the bending stress, right? And the next one is torsion. Torsion क्या होता है? I'll draw this diagram again like this. एक just erase it. The force is acting at one end, force is acting like in this direction, clockwise direction, and in other end the force is acting on anti-clockwise direction. तो ये क्या होगा? Body center से twist हो जाएगा, right? So when this type of force is acting, this type of force we call it as torsion, and the stress called will be torsional stress or twisting stress, right? So as far as this chapter, the chapter of this subject is concerned, we shall be starting with direct stress, right? Direct stress and direct strain. Then how do we measure it? Next page shall elaborate that. Strain, right? So are you clear that the type of force defines the type of stress? Clear? Then how do we measure it? As मैंने अभी जैसे बोला कि we shall be talking about the direct stress, and it is measured as, अगर इसको शब्दों में define करना हो तो कैसे करेंगे? It is defined as the force acting on that body divided by the cross sectional area. This is the force or the load. This is the this force. When we talk about direct stress, that means it is direct force. Clear? We are not talking about any other force. When I talk about direct stress, it means it is a direct force. Means we are talking about this body and the forces are acting either in this direction or in this direction. That means if it is either it is compressive or it is tensile. T is for tensile, C is for compression. And it is force acting per unit area, right? For example, this is the member. This is the area, shaded one. इसके ऊपर जितनी force लग रही है, I mark it as P. Right. So if this area is A, that means this is the breadth and this is the depth. इस area को हम measure करेंगे, so that shall be counted as the stress, direct stress.
and it is marked as, some books write it as small p. Very clearly you write, some books write it as small p, some books write it as small f, or in some of the books it is mentioned as, what is this? Sigma. Sigma. Right. What is this? ये क्या है? I. हाँ बोले बोले. Right. What is this? Phi. Phi. Okay. What is this? Theta. Good. So these are some basic notations you should remember, and when you try to refer stress, you can either name it as sigma, small sigma we call it as, right? Or you can name it as small p, or you can name it as small f, right? So जब भी आप किसी physical quantity को define करेंगे, just let you know that you need to write the definition of that quantity. Definition मैंने आपको बोल दिया, that stress, direct stress, we are talking about direct stress, right? आपसे लेके मैं जब भी stress word आपको बोलूंगा तो आपने assume करना है कि I am talking about direct stress और axial stress और longitudinal stress, right? Stress का मतलब अभी तक ये चीज, जब तक unless until we are not talking about something different, तो ये मान के चलना. फॉर एग्जाम्पल आई एम राइटिंग हियर एज 2, ये क्या है? इज इट प्लस और माइनस? Plus. इट इज प्लस, बट वी आर नॉट राइटिंग प्लस हियर, राइट? सो बट अगर माइनस लिखना हो तो माइनस लिखूंगा, -2. तो दैट इन दैट सेंस आज से लेके जब तक मैं बोलूँ ना, जब भी मैं स्ट्रेस वर्ड बोलूंगा तो आपको मान के चलना है कि ये डायरेक्ट स्ट्रेस की बात कर रहे हैं हम. क्लियर? तो Yes. जब हाँ किसी भी चीज को जब डिफाइन करेंगे तो हमें उसमें 4 चीजें उसमें लिखना ही लिखना है उस डेफिनेशन में, right? First is the one line or two line definition in sentence formation, that stress is defined as the force acting on that body divided by the cross sectional area of that body on which that force is acting, right? जैसे मैंने अभी ये फिगर में बनाया है यहाँ नीचे, ये वाले फिगर में, right? Then उसका मैथमेटिकल नोटेशन जो भी मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, that small p is equal to capital P divided by area, right? तो कैपिटल P फोर्स है, एरिया इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया. देन थर्ड इज द, उसको हम लिखते उसको नाम मैथमेटिकल नोटेशन, वी कॉल इट एज नोटेशन, राइट? कि एफ लिखना है, स्मॉल p लिखना है या सिग्मा लिखना है. एंड द फोर्थ वन इज द यूनिट्स. एंड माइंड यू, मैंने उस दिन भी आपसे बात कर रहा था, तो यूनिट्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, राइट? क्योंकि न्यूमेरिकल में आपको जनरली इट शैल बी इन न्यूटन per mm square. This is SI system, right? But in some of the books, it could be Newton per square meter. It could be Newton per mm square. It could be kg per square meter, or it could be in kg per square सेंटीमीटर. तो आपको एक केजी में कितने न्यूटन है, एक न्यूटन में कितने केजी है, एक मीटर में कितने मिलीमीटर है, ये सारी चीजें आपको बेसिक पता होनी चाहिए, राइट? फॉर एग्जांपल पास्कल, व्हाट इज पास्कल? As unit of pressure. It is unit of pressure or stress. तो इस 1 पास्कल is how much? ये देखिए आपको याद नहीं है, राइट? 1 पास्कल आपके स्कूल में टीचर बताते हैं, पास्कल इज इक्वल टू हाउ मच. अगर मैं पूछूं न्यूटन पर, मैं आपको वैसे बता देता हूँ, आपके स्कूल में शायद बताया होगा, कहते हैं 1 मीटर और 1 मीटर का ये कमरा है ऊपर से देखने में, इसकी विड्थ 1 मीटर है, उसकी चौड़ाई भी 1 मीटर है, राइट? तो इसके बीच में न्यूटन खड़ा है. गॉट इट? कि कमरा है, उसके बीच में न्यूटन खड़ा है, उसकी चौड़ाई 1 मीटर है, लंबाई भी 1 मीटर है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? पास्कल. समझ लगा? याद रहेगा? हेलो. Yes. So 1 Pascal is 1 Newton per
मीटर स्क्वायर। तो मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ कि बेटा यूनिट्स के बारे में आपको, क्योंकि जब आप न्यूमेरिकल करेंगे ना तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि न्यूमेरिकल आपको यहाँ पे, जस्ट रीड इट। अब अगर आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे, सिर्फ स्टेटमेंट अभी सॉल्व नहीं कर रहे हम लोग। दिस इज इन सेंटीमीटर, राइट? दिस इज इन किलो न्यूटन, दिस dimension is millimeter, got it? And there's one term written here, this is mn. M is mega newton, right? If you see, if you go to some another question, you'll find some different values there, right? तो मेरे कहने का मतलब है कि जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करना शुरू करेंगे, some of the dimension will be in centimeters, some of the dimensions in millimeters, some of the dimension will be in meters, so you have to be sure. इसीलिए मैंने उस दिन बात की थी कि 2 केले और 3 संतरे को हम आपस में जोड़ नहीं सकते unless until we convert into some common factor, right? Common factor और 2 संतरे और 3 केले का क्या था? Fruits, right? So that is the typical definition of direct stress. I'm sure you have got it. I'm just rub कर रहा हूँ मैं. So we're coming to so 1 Pascal is 1 Newton per meter square. Clear? 1 मीटर बाई 1 मीटर के कमरे में अगर न्यूटन को खड़ा कर दें तो दैट इज डिफाइंड एज पास्कल, राइट? सो दिस इज डायरेक्ट फोर्स। अगर इसी चीज को मैंने कवर करना हो, इफ आई आस्क यू व्हाट इज टेंसाइल स्ट्रेस, इसी में इस डेफिनेशन में से आपको डिफाइन करना व्हाट इज टेंसाइल स्ट्रेस और व्हाट इज कंप्रेसिव स्ट्रेस। So tensile stress, because we are talking about direct stress, right? Both are direct stress. तो इस चीज को हम लिखेंगे this is equal to tensile force divided by cross sectional area. As simple as that, right? तो इसको डिनोट करेंगे सिग्मा टी और एफ टी, स्मॉल पैर में लिखेंगे टी, that means tensile. Similarly, compressive stress will be compressive force divided by cross sectional area. So this shall be denoted by sigma c or fc, right? Clear? तो एक ही डेफिनेशन में से आप दूसरी 2 डेफिनेशन लिख सकते हैं. Units will remain the same because both are the ratio of force divided by area, right? So there is one term written here. This is GPa. GPa is what? G is what? Giga. G is what? Sometimes the stress will be given in giga. Pascal. So a giga is how much? Sometimes we write as kilonewton, sometimes we write as meganewton, sometimes we write as giganewton, right? What is giga? What is mega? What is kilo? Kilo is 10 raised to power 3. Two. Mega is 10 raised to power 6. Giga is 10 raised to power 9. 9. तो ये आपको याद रखना, ये तो बेसिक सी चीजें हैं, आपको पता होनी चाहिए. अगर नहीं है तो साथ साथ हम लोग रिपीट भी, बट थोड़ा सा टाइम इसमें ज्यादा लगता है. Anyhow, so we just finished the direct stress. That is simply, if it is compressive force divided by area. If it is tensile force, then tensile force divided by area, that will give you tensile stress as well as compressive stress. The formula will remain the same. Only thing that you need to change is the notation, कि उसको लिखना किस फॉर्म में. Then the second is shear stress. Shear stress is denoted by the same formula, that shear force divided by shear area. जैसे अभी मैंने लास्ट पेज पे ये डायग्राम बनाई थी कि यहाँ पे फोर्स लग रही है और शेयर होके जो फोर्स मेंबर है जो यहाँ पे आ गए, राइट?
जितना एरिया यहाँ पे आपस में शेयर हो गया, जितना कट हो रहा है, वो एरिया मेजर करेंगे और इसको शेयर फोर्स जितनी लगी हुई है, तो इसको डिनोट करते हैं हम लोग। ये क्या लिखा है मैंने साइड पे? व्हाट इज दिस? दिस इज अनदर साइंटिफिक नोटेशन, Tau. टॉ, Tau. राइट, टॉ, TAU, टाउ, टॉ बोलते हैं इसको, राइट। तो ये आपको याद होना चाहिए। अगेन यूनिट्स वुड रिमेन द सेम, न्यूटन पर स्क्वायर मीटर और न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, राइट। अब जैसे मैंने पहले कहा कि इन दिस चैप्टर वी शैल बी टॉकिंग, देयर इज अ सेपरेट चैप्टर ऑन शियर स्ट्रेस, जैसे मैंने लास्ट में बोला था। अभी वी आर टॉकिंग अबाउट डायरेक्ट स्ट्रेस, देयर इज अ सेपरेट चैप्टर ऑन शियर स्ट्रेस, सेपरेट चैप्टर ऑन बेंडिंग स्ट्रेस, ये बाद में करेंगे हम लोग, बट फिलहाल हम concentrated on direct stress. But now, for the time being, we are just talking about the types of stresses, right? Now, there's another one more stress we call it as thermal stress. What is thermal? When we talk about temperature, आपने रेलवे लाइन देखा है ना, जिस पे ट्रेन चलती है, लाइन, Yes. राइट? Yes. कुछ देर के बाद उनमें बीच में गैप होता है, राइट? ऐसे होता है, तो साथ में ये जुड़े होते हैं इस प्लेट से। ध्यान से देखेंगे, इसमें गैप होता है, बोल्ट जो लूज होते हैं, इसके ऊपर ट्रेन चलती है। The wheel is like this, right? So there's a gap here because this is Yes. made of steel. And thermal stress में क्या होता है कि जब टेम्परेचर, आपने कभी किसी चीज को गर्म किया होगा, तो गर्म करने से, बहुत ज्यादा गर्म करने से वो चीज क्या कई बार बेंड हो जाती है ना, या उसकी शेप चेंज हो जाती है, Yes, sir. राइट? कलर चेंज हो जाता है। So when there is change in temperature of any material above or below its normal room temperature, then that change in temperature causes some stress in that body, which tries to change the dimension of the body. आप सेंटेंस को पढ़ें, change in temperature below or above the neutral equilibrium of the material। मान के चलें कि किसी बॉडी का न्यूट्रल इक्विलिब्रियम जो है वो 28 डिग्री पे आएगा, 28 डिग्री से टेम्परेचर बढ़ाएंगे या 28 डिग्री से कम करेंगे, तो उस बॉडी की शेप चेंज होगी। और शेप किस लिए चेंज होगी? क्योंकि उसमें थर्मल स्ट्रेसेस induce हो गई हैं। So those stresses which are induced with change in temperature above or below its normal temperature and which cause extension or shortening or twisting, या उसको लेंथ को कम करेंगी, या उसको छोटा बड़ा करेंगी, या उसको मोड़ने की कोशिश करेंगी, घुमा देंगी। So this type of stress develop in the body due to change in temperature is called thermal stress, or simply we call it as temperature stress, right? The definition is the change in temperature above or below the equilibrium temperature of any body. If it happens due to some reason, then there is change in the shape of the body. Either it can be extension, it can be shortening, or it can be twisting, and it happens because of the thermal stresses induced in that body, and it is known as temperature stress or thermal stress, राइट? तो इसकी जो चेंज इन टेम्परेचर ड्यू टू थर्मोस्टेट, इसका टॉपिक हम इसी चैप्टर में करेंगे, छोटा सा। तो इट हैपेंस ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर। तो उससे पहले हम लोग बात, दिस इज स्ट्रेस, राइट? जनरल स्ट्रेस, थर्मल स्ट्रेस के ऊपर, इसमें कितने टेम्परेचर से कितना चेंज होता है, इसके ऊपर हम इसी चैप्टर में एक या दो न्यूमेरिकल करने की कोशिश करेंगे। देन हाउ डू वी मेजर इट? सो फॉर द टाइम बीइंग वी आर जस्ट डिफाइनिंग द टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस। अभी तक हमने कितने स्ट्रेसेस किए हैं? स्ट्रेस, डायरेक्ट स्ट्रेस, डायरेक्ट स्ट्रेस में कंप्रेसिव, देन टेंशन, देन shear, then bending, then temperature, right? These are the types of stresses that we have mentioned as of now. Now the next is strain, because stress is, chapter का नाम जो है वो stress and strain। तो strain जो है, that is the effect on the body due to the stress, right? So what kind of effect?
is there, that also depends on the type of stress. The type of stress depends on the type of force. That means the type of force would depend also define the type of strain. जिस टाइप की फोर्स होगी उसी टाइप की स्ट्रेस होगी, उसी टाइप से फिर उसमें स्ट्रेन होगा. द स्ट्रेन इज व्हाट द चेंज इन डायमेंशन और द डीफॉर्मेशन, राइट. तो इस स्ट्रेन को हम रिलेटिव टर्म में मेजर करते हैं कि जितना पहले था उसके हिसाब से अब कितना हो गया है चेंज. दैट डिफाइंस द स्ट्रेन. फॉर एग्जांपल, if this is the bar, the force is acting, this is direct force, tensile force, T is acting on it, and this is the length of the dimension, the body. जब ये लेंथ बढ़ेगी तो लेंथ बढ़ के जो है वो लेंथ रॉड थोड़ी पतली भी होगी, राइट. तो लेंथ बढ़ के इसकी L प्लस डेल्टा L हो जाती है. दिस इज डेल्टा, स्मॉल डेल्टा, राइट. सो व्हाट चेंज हैज हैपेंड? डेल्टा L. पहले L था, अब डेल्टा L प्लस L हो गया. So the change which has happened is delta L. So this is the, if it's a direct force or direct stress, then it is direct strain. Again, it will be tensile strain and compressive strain depending on the stress. Right? If it is shear stress, then it is shear strain. And then the next is volumetric strain. ये हम अभी करते हैं थोड़ी देर में. वॉल्यूमेट्रिक, जब को 3 dimensional बॉडी है उसकी एक डिमेंशन चेंज होगी तो दूसरी डिमेंशन भी चेंज होती है, राइट. तो तीनों साइड पे अगर डिमेंशन चेंज हो रही है तो उसका जो कंबाइंड इफेक्ट है दैट इज मेजर्ड एज वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन. तो डायरेक्ट स्ट्रेन, स्ट्रेन को हम डिनोट करते हैं, जैसे मैंने अभी कहा कि डेफिनेशन जब कोई भी लिखनी है तो उसके पहले डेफिनेशन, डायरेक्ट स्ट्रेन इज डिफाइंड एज change in dimension divided by original dimension. इसको लिखते हैं हम E से, small e, और some of the books are writing in some epsilon, but we are referring it as small e, right. So dimension could be depending upon the stress, which is dimension could be length and change could be increase or decrease. अब अगर मैं इसमें इस चेंज की जगह इंक्रीज लिख दूं, दैट उसका मतलब कौन सी फोर्स लग रही है उसके ऊपर? टेंसाइल. टेंसाइल. अगर मैं यहाँ पे डिक्रीज लिख दूं तो कंप्रेस. अगर मैं यहाँ पे लेंथ लिखूं दैट मींस डायरेक्ट स्ट्रेस है. अगर मैं यहाँ पे वॉल्यूम लिख दूं दैट वुड बिकम वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, राइट. then this is lateral strain. या भी next page पे हम इसको define करते हैं. So these are the types of strain depending on the, so basic definition is change in dimension over original dimension. I think this is clear in this diagram as well. Yeah, you can see this diagram. This is original length. कितनी लेंथ बढ़ गई है? पहले L थी और बढ़ने के बाद L प्लस डेल्टा टोटल लेंथ होगी, राइट. सिमिलरली इन अनदर डायरेक्शन थोड़ा सा पतली होगी. पहले डिमेंशन B थी, थोड़ा सा कम हो गया, ये B डैश होगी. मींस चेंज दैट हैज हैपेंड इन दिस डायरेक्शन. दिस इज B माइनस B डैश. और इस डायरेक्शन में the change has happened L plus delta L under the effect of tensile force, right. अब इसी के साथ से हम जो स्ट्रेन को डिफाइन करेंगे, टेंसाइल स्ट्रेन. T is equal to increase in length. अब चेंज को मैंने इंक्रीज में कर दिया, डायमेंशन को मैंने लेंथ में कर दिया, डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ, राइट. So increase in length is this much, delta L over original length. This is
tensile strain. Similarly, compressive strain is EC. This is decrease in length. Decrease in length is delta. It will be same delta L upon L. The only difference is that it shall be decrease, and here it is increase. Right. We last sheet पे मैंने लिखा था lateral strain. So both these strains are called direct or longitudinal strain. Either it is compressive or it is tensile. Now you see in this diagram, मैं थोड़ा सा रब कर दूं. Just highlighting in red now. You see in this diagram, जब लेंथ बढ़ती है तो दूसरी डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, in this direction, there is a change in पहले dimension जो थी इसकी b थी, अब थोड़ा सा पतला हो गया, पतले होने के बाद dimension बन गई है b dash. That means the dimension has reduced. So if the dimension जो change हो रही है, if it is happening, if you see the force is acting in this direction, force is acting in this direction, but the change is happening in direction perpendicular to the action of the force in this direction, 90 degree पे. एक तो dimension change हो गई along the direction of the force, एक dimension change हो रही है at 90 degree to the line of action of the force. समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? The change which is happening in a direction 90 degree to the action of the force is called lateral strain. Lateral strain. Lateral means side पे कितना change? अब side पे जो change हुआ हमारा, that is b minus b dash divided by b. You look at this figure, right? So the lateral strain is the change in dimension in the direction perpendicular to the action of the force. Force हमारी इस direction में लग रही है, but change is happening in this direction. Means width के direction में change हो रही है. उस change को उसी की उस side में जितनी original dimension थी divide करेंगे, then we get it as lateral strain. Are you clear? Yes. Okay. So we move to the next. ये हम already कर चुके हैं. That longitudinal strain is change in change in dimension over regional dimension. So it is defined as delta L upon L. It has no units because length divided by length, so it will not have any. It's just a number, right? So इसको हम denote करते हैं EC के साथ, that means compression, ET के साथ, that means tension, right? और shear strain, जैसे shear force लगी तो shear strain पैदा होगी, and shear strain is measured in terms of theta. ये वाला जो phase था पहले, ये वाला, now it has moved to, this phase has changed to, means एक phase दूसरे phase के साथ ऐसे change हो गया, right? The body has moved to different direction along one plane. This is the plane जहाँ से body slip हो गई या cut हो गई, and it has moved by an angle theta, and this theta is measured as tan theta. And if this मैं triangle द्वारा draw कर रहा हूँ, this dimension is A, and this A has moved to A dash by an angle theta, and this if this is the length, means the depth of that surface, and this tan theta is equal to A dash upon L, and it is equal to theta only. So tan theta को हम theta measure करते हैं because theta the angle is very small, it's almost negligible, so we can consider. ये आपने mathematics में देखा है, the angle is small, then we can consider as tan theta is equal to theta. So for the time we will just stick to the definition, but we shall be dealing in detail in the special chapter for this, that is shear stress and shear strain, right? Now coming to the volumetric strain.
जैसे मैंने कहा कि अगर दिस इज द क्यूबॉइड हैविंग 3 डायमेंशन, ये फोर्स लग रही है इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में भी फोर्स लग रही है, इस डायरेक्शन में भी फोर्स लग रही है, राइट? So this type of force will affect on all the dimensions. Then combined effect of this force in volumetric fashion means the change in dimension in L direction multiplied by change in direction in width direction multiplied by change in direction in depth. So तीनों में जितना चेंज होगा उसको चेंज को मल्टीप्लाई करेंगे, द चेंज इन वॉल्यूम मीन्स थोड़ा थोड़ा डायमेंशन तो लेंथ भी बढ़ी है, थोड़ी थोड़ी डायमेंशन विड्थ में भी चेंज हुई है, थोड़ा डायमेंशन डेप्थ में भी चेंज हुई है. सो कंबाइंड इफेक्ट इन द वॉल्यूम डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम, दैट विल give you the volumetric strain. So this is E, not, do not confuse it with L. This is E volume, right? Then next is lateral strain. Lateral strain मैंने already explain कर दिया आपको. The change in dimension in the direction perpendicular to the application of the force. The force is acting in this direction, but when we consider the change in this direction, change in the dimension, जैसे पहले d था बाद में small d हो गया, this is the change in the direction perpendicular to the force divided by the original dimension in that direction. We call it as E lateral. This is E L T, lateral के short form, E lateral, right? So this is the definition for lateral strain. Now coming to the रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, ये आपने 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में पढ़ा होगा, स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन. पिछले सेमेस्टर में भी आपने इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में पढ़ा होगा. You have heard about elasticity, you have heard about modulus of elasticity, you have heard about Young's modulus of elasticity, yes or no? Hello. So, Right. So we will just repeating that there are few terms. So, but somebody can define me what is elasticity? Elastic limit. ये आपने पढ़ा तो हुआ ना? Have you seen this diagram? Have you seen this diagram earlier? Hello. Nobody? क्वेश्चन नहीं पूछूंगा, आपको सिर्फ यस और नो ही बोलना है. आपने ये स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम तो देखा होगा बेटा. yes, sir. Yes, sir. यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी सुना Yes, हुआ है? sir. Yes, Yes, sir. sir. राइट. मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी सुना हुआ है? राइट. So when we do the testing of a typical mild steel, हर एक मटेरियल का अपना अपना कर्व बनेगा, बट दिस डायग्राम इज दिस कर्व जो बना रहे हैं, ग्राफ बनाया हुआ है, दिस इज फॉर माइल्ड स्टील. सो वी टेक ए सैंपल ऑफ स्टील मेंबर, लेंथ का एक मेंबर लेते हैं, उसको थोड़ा सा खींचते हैं दोनों तरफ से, फोर्स लगाते हैं, ये धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाता है लंबा, राइट? जब बढ़ना कुछ स्टेज पे जा कुछ स्टेज तक अगर इसका ग्राफ प्लॉट करें, कितनी फोर्स लगाई है और कितनी लेंथ उसकी बढ़ी है. The horizontal axis, x-axis is the change in length. Strain is delta L upon L, and along the vertical axis, this is P upon A, stress, or we call it a small p. जब ग्राफ प्लॉट करेंगे, up to some point, this graph is a straight line, inclined straight line at very acute angle, and जहाँ तक ये मटेरियल है, इसको मैं रिपीट नहीं करूंगा. लास्ट ये मटेरियल आपने प्रॉपर्टीज आपने सारी इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में पढ़ चुके हैं, राइट? So now we are talking about the stress relationship between stress and strain, and relationship between stress and strain is defined by Hooke's law. Hooke's law states that up to elastic limit is the limit of the force or the stress, कि उस फोर्स तक अगर वो उस फोर्स को लगाने के बाद फोर्स को रिमूव कर दिया जाए, the body would come back to its original position. जितनी भी उसकी लेंथ बढ़ी है या घटी है, तो वापस उसी शेप में वो बॉडी आ जाएगी. सो अप टू दैट पॉइंट
till which the change in the body is a temporary phenomena or can come back to its original position is called elastic limit, and Hooke's law states that stress is proportional to strain. Stress is proportional to strain. Let me erase this a little bit. Just hold on. Okay. And now I'm writing here this within this diagram. Now we are defining the relationship between stress and strain. And according to Hooke's law, elastic limit already is clear to you that the limit of the force up to which the body is in a position to come back to its original position after the removal of the force, right? And Hooke's law states that stress is proportional to strain. प्रोपोर्शनल का मतलब होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, कि जितने स्ट्रेस बढ़ेगी उसी के हिसाब से स्ट्रेन बढ़ेगा। अगर इसको फॉर्मूले में लिखें दैट P इज प्रोपोर्शनल टू E, राइट। P को जो है P अपॉन A भी लिख सकते हैं, दैट इज फोर्स। एंड अगर साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटाना हो देन वी टेक इट एज E, एंड E को लिखना हो तो डेल्टा L अपॉन, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट डायरेक्ट, राइट। So this is the formula upon showing the relationship between stress and strain, and how according to Hooke's law, stress is directly proportional to strain within the elastic limit. And to remove the sign of proportionality, we have introduced a constant here. This is called modulus of elasticity. And if you rework this formula, this E becomes P upon A into L upon delta L. This is the formula that you need to remember. इसी के बेस पे हम numericals करेंगे, right? So I have written over here as P upon A divided by delta L upon L, right? तो P upon A को अगर हम small p में भी लिख सकते हैं, this is stress multiplied by original length divided by change in length, right? And E can also be written as E is equal to small p upon E, where E is strain. So all these formula you should this like in one form. It is stress upon strain. That E, capital E, is called modulus of elasticity. Modulus of elasticity. राइट, जितना मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी किसी मटेरियल का ज़्यादा होगा उस हिसाब से बॉडी की जो इलास्टिक प्रॉपर्टीज है वो ज़्यादा होगी, उस बॉडी ज़्यादा फोर्स को हैंडल कर पाएगी उस, बिकॉज विल बी डीलिंग विद डिफरेंट मटेरियल्स इन, फॉर एग्जांपल सिविल इंजीनियरिंग में हम लकड़ से भी काम लेते हैं, ग्लास वी आल्सो यूज, वी यूज स्टील, वी यूज कंक्रीट, राइट। ऑल दीज मटेरियल्स हैव डिफरेंट मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। so you note down one homework for you. मैंने वो पिछली बार भी एक होमवर्क दिया था आपको, याद है आपको? यस सर। तो somebody should tell me. मैं पूछा था आपसे स्ट्रेस और नॉट स्ट्रेस, टन के बारे में पूछा था मैंने, लॉन्ग टर्न एंड शॉर्ट टर्न। पिछली बार शायद आपने बता दिया था। There are 3 types of tons here, right? One is TON, this is 1000 kg. Another one मैंने आपको बोला था टन which was long, and another one was short. Long was 2240 pounds and short one was 2000 pounds, and 1 pound is equal to right, इसको केजी में कन्वर्ट Yes, कर लेंगे आप। तो ये होमवर्क था, इस बार का होमवर्क नोट करें आप सभी। मेरे को मैं कल पूछूंगा आपसे, टेल मी दी
मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मैं खाली पेज लेता हूं। सेकंड। Yeah, this is the blank page. Write down the value of modulus of elasticity. For number 1, glass. Number 2, steel. Steel means iron, right? Mild steel. You write it for mild steel. Number 3 is cement concrete. Number 4 is wood. Number 5 is number 6 is इतना काम करें, राइट। स्टील का मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, दिस इज 2.1 into 10⁵ न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। ये आपको कल लिखना है, आपको मेरे को बताना, अपनी नोटबुक पे रखें, मैं आपसे पूछ लूंगा। ज्यादा मुश्किल काम नहीं, आपको सिर्फ गूगल में बैठना है या आपके पास जो बुक है आपको उस पर देखना है, राइट। लिखेंगे? Yes. ओके। Yes, sir. So coming back to this topic here, अभी जो हमारा चल रहा था, that we were just discussing Hooke's law, and Hooke's law defined the modulus of elasticity. There are two modulus of there are two another moduli, which one is we call it as modulus of rigidity, and we denote it as G, and third one is bulk modulus, we denote it as K. ये हम कल करेंगे। Right now it is 1 hour for your lecture, and then कल का जो काम है, we'll be doing one numerical on E, we'll be defining G, we'll be defining K, and then third one is the relation. G, E का G के साथ, E का K के साथ, then तीनों का आपस में, right? So it is already there in this note which is shared with you. तो ये इसके ऊपर कल करेंगे, एंड एक डेफिनेशन हम करेंगे पॉइजन्स रेशियो, लेटरल स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं, इनकी सिग्निफिकेंस क्या है, देन वी विल बी डूइंग 1 or 2 न्यूमेरिकल टुमारो। So all be with your calculators on your desk, 1 or 2 numericals और कल हम सॉल्व करेंगे। वेरी सिंपल काइंड्स ऑफ न्यूमेरिकल, आपको सिर्फ फार्मूला थोड़ा सा ढूंढना है, उसमें वैल्यूज डाल के आपको वैल्यूज कैलकुलेट करनी है, आंसर ढूंढना है, दैट्स ऑल। So this will be the job for tomorrow, right? So any questions from your side as of now? आपकी तरफ से कोई क्वेश्चन है? कोई बेटा क्वेश्चन आपकी तरफ से? Hello. No, sir. Okay. So shall we close it now? This lecture? Yes, sir. Yes. Okay. So we shall be meeting tomorrow. Tomorrow the lecture is what time? कल सुबह है लेक्चर हमारा 10:45।
तो कल मिलते हैं। आज की क्लास में मेरे पास अभी सिर्फ 18 बच्चे हैं। तो आपको अटेंडेंस मैंने उस दिन भेज दिया था कि कौन कितने टाइम पे यहाँ पे रहा। ठीक है, आज का भी हमारे पास रिकॉर्ड रहेगा। आई जस्ट चेक इट। थैंक यू। आप जो कवर कर चुके हैं इसको बुक में से पढ़ना शुरू करें, जो टॉपिक आपको दिया है। बुक आपके पास है, जस्ट कीप स्टडिंग दैट बुक। So I'm closing this session. We'll meet tomorrow. Thank you. Thank you.